You can ask whatever the queries you have. Okay? Yes? Yes, ma'am. Okay. So now you can see here. I will share the screen with you. We are just supposed to understand now the theoretical aspect of determination of melting point. Okay. Now, if you will look into this experiment is experiment number 2 in your manual. If you will just look into your manual, it is experiment number 2. Okay. Now, just I am sharing the PowerPoint with you, wherein I am going to explain the theoretical aspect. Okay. Now this is, we are starting with the melting point determination. Okay. If you will go down, this is the aim of your experiment. That is the title from your manual, to determine the melting point of the given solid organic compound. What is the aim? To determine the melting point of solid organic compound. Now, why only solid organic compound and why melting point? Because definitely, since it is melting, okay, so the compound is solid, okay, which is converted into the liquid form. Because if you will look into the definition of the melting point, it says that it is the state of equilibrium wherein the solid substance exists in equilibrium with the liquid form. Okay, definitely if you will heat the substance, if you heat the solid compound, it is going to break the intermolecular forces which are present in the compound, the bonding which is there in the compound, and due to breakdown of the intermolecular forces, the compound is going to melt. Okay, since the white or whatever the bonding is there, it is getting decreased, it is getting broken, so it will convert it to the liquid form. Now for this, you need to understand the temperature effect, you need to understand the intermolecular forces. Okay, structural aspects क्या है organic compound के, जैसे कि you might have heard in the demonstration video, you have gone through the statement which I told you, wherein I told you that the impurities are going to lower the melting point, as well as the intermolecular forces are going to be broken down, wherein because of the breakdown of these intermolecular forces, the compound is going to melt. Okay. Now here, first you are supposed to understand the concept, few of the concept, wherein proposition 1 you find purity and proposition 2 you find identity. Okay. So what do you mean by the purity of the compound? The purity is nothing but it is indicated by the sharp melting point. That means if the substance is having a sharp melting point, then you can say that your substance is having high purity. Your organic compound is having high purity. Okay? And if there are deviations, if the melting point is not sharp, you are getting a melting range, or you are getting some other reading other than the specific reading. If the melting point of the compound is known, then you can say that the substance may be altered. मतलब adulterated हो सकता है, या फिर उसमें कुछ impurity present हो सकता है, because of which it is altering its melting point. Okay? Then identity. A definite and sharp melting point is an identity of pure crystalline organic compound. That means if the substance is pure, okay, then it will have a definite and sharp melting point, which is an identity of a pure organic compound. If you are getting a sharp and definite melting point, then you can call your substance as a pure crystalline organic substance. Okay? That is the reason it is an valuable criteria for identification of organic compound. So can you tell me the reason now why these melting point as well as boiling point determination, the melting point and boiling point are called as physical constant? Why it is so? Why they are called as physical constants? Yes?
What is the meaning of physical constant? Yes. Because they state the physical state of the substance. Because this change the physical state of the substance. Like melting point changes from solid to liquid and boiling from liquid to vapor. That means in the sentence you can see it is a pure compound always have a definite and sharp melting point. मतलब अगर substance pure है, then only it is going to give an identity to that organic compound that the given compound is this. Once you refer to the literature, okay, that is the reason they are called as constant values. That means a particular compound is having a constant melting point. Say for example, in demonstration we have observed it for benzoic acid. What is the melting point? 121 degrees Celsius. So if the reading is nearby plus minus 2 range, then you can say that your substance is a pure crystalline organic compound. Okay? Okay, ma'am. So what is the significance of determination of melting point? The significance is it is used for identification of organic compound. Okay? Purity and identity of the compound. मतलब ये आइडेंटिफाई तो करता ही है, कैसे? अगर डेफिनेट शार्प मेल्टिंग पॉइंट है किसी सब्सटेंस का, देन इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. मतलब अगर तुम लोग बोलोगे कि बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 121 है, तो वो उसी का हो सकता है. किसी दूसरे स्ट्रक्चर का, किसी दूसरे कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट 121 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता. ओके? So you can identify that compound as well as you can have a call on the purity of that substance. That means if it is giving a particular sharp definite melting point, then it is pure compound. मतलब क्या है, इसका significance क्या है? It is used for determination of purity of the substance as well as for identification of the organic compound. Understood the significance? Yes. कौन से दो चीजों के लिए मेल्टिंग पॉइंट रखना पड़ता है? प्यूरिटी के लिए एंड आइडेंटिटी के लिए. ओके. नाउ इफ यू लुक इनटू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स wherein the intellectual skills and the motor skills they have mentioned. Okay, so if you will refer to the Roman 4 page number of your manual, wherein you can find that it is they have mentioned few of the intellectual skills over there and few of the motor skills over there. So उसका मतलब क्या है? Intellectual skills and motor skills का मतलब क्या है कि intellectual skills में ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. ओके, किसमें हेल्प करता है? कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग. तो इंटेलेक्चुअल स्किल जो है, अभी इसमें 5 टोटल 6 इंटेलेक्चुअल स्किल्स है एंड 5 मोटर स्किल्स है मैनुअल में. तो 6 इंटेलेक्चुअल स्किल्स में से और 5 मोटर स्किल्स में से कौन से इंटेलेक्चुअल स्किल मेल्टिंग पॉइंट को अप्लाई करते हैं एंड कौन से इंटेलेक्चुअल स्किल मोटर स्किल, मतलब कौन से मोटर स्किल मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन को अप्लाई करते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड नाउ. ओके, so for determination of melting point, what is required? First, it is very much necessary that you should understand the concept of the experiment. Okay, मतलब why we are doing this experiment. Okay, what is the reason behind that? What is the significance of that experiment? Then you are supposed to understand the test procedure. मतलब whatever the demonstration we have just now seen, that you first need to understand. Okay, the procedure, the detailed procedure, how you perform that experiment. Okay, then next is to analyze and interpret the observation. मतलब क्या? Not only this, along with that you should have the skills to accurately interpret the observation whatever you have taken.
मतलब रीडिंग लेने के बाद भी समझो हीटिंग चल रहा है और पार्टनर के साथ बात चल रही है और वो मेल्टिंग पॉइंट आके चला भी गया, तो will it do? Is it going to work out? Yes? No, ma'am. No, ma'am. No, definitely not. So you should have that skill with you, that you are supposed to be attentive whenever you are taking the reading. You are supposed to observe it carefully and you are supposed to interpret the observation, whatever you have taken. Okay? Then one more motor skill you require, wherein you need to know or you need to understand the ability to handle the equipment and take and record the observations. मतलब assembly proper handle करने को आना चाहिए, observations लेने को आना चाहिए, मतलब heating should be uniform, heating should be slow. Okay, then you should properly know the adjustment of the assembly, which I explained you in the demonstration, that जो thermometer है उसका जो position है वो position it should not touch to the Thills tube. Okay, मतलब वो Thills tube के borders को touch नहीं होना चाहिए, it should be exactly at the center of the Thills tube. और thermometer का जो bulb का level है वो V-shaped arm के level में होना चाहिए. Level of liquid paraffin should be just above the arm of that V-shaped arm of the Thills tube. ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें पहले तुम लोगों को समझनी चाहिए, and then you are supposed to actually perform the practical. Okay, the next thing is, if you will see the apparatus, what are glassware you require? You require Thills tube, thermometer. Okay, then you require a capillary tube. Okay, then thread and all other accessories are required. Then chemicals, you need liquid paraffin. Okay, now why only liquid paraffin? Because liquid paraffin, I have already explained it to you in the demonstration, but still we will once again understand that liquid paraffin, since it is having a sharp boiling point, since it is a liquid, it will have a boiling point, not melting point. Just understand that you are supposed to write it in proper way, because few of the students write the reason that liquid paraffin is having a very high melting point. How can it have a melting point? Since it is a liquid, it will definitely have a boiling point, right or not? So you are supposed to take care of few such minute things. Okay, liquid paraffin is having high boiling point. Approximately it is towards 300 degrees Celsius. And not only that, it can also be used in various externally applied pharmaceutical preparations, since it is having the emollient properties. That means even if the spillage occurs, it is not going to harm you. Why? Because it is having emollient properties, that is nothing but it will soften or soothe the skin. So, safety point of view also, it is always safe to use liquid paraffin. So, it is having the advantageous parameters more. So, the liquid paraffin is used. Beyond that, you can also use one alternative, which is concentrated H2SO4. What is the name of the alternative liquid? Concentrated H2SO4. Yes. Concentrated H2SO4 also you can use, but definitely if you will think from the safety point of view, is it safer to use concentrated H2SO4 when you are working on your working table? No, ma'am. No, definitely not, because you handle such type of this thing, means the concentrated whatever the liquids are there, you handle it in the fume hood, right? I've explained it to you in the introduction. So the fume hood chamber you require for operation of or handling of such chemicals, okay, which are hazardous, corrosive materials, okay. So it is always safer to use liquid paraffin for determination of melting point as well as boiling point. Again, it is a transparent liquid, so you don't have any problems in recording the observation, because you can clearly observe, since the liquid is very transparent. Right? Yes, ma'am. Okay. Then next is, you can see here
that it is the assembly, okay, the melting point apparatus which is there in your manual also. This is the stand, okay. This whole assembly also I have explained it to you in the demonstration. This is the tilt tube which is having a V-shaped arm. Instead of that, you can use the beaker also, but when you are using a beaker instead of tilt tube, you are supposed to take care that you are using a stirrer. What care you should take when you are using a beaker instead of tilt tube? Use stirrer. Yes. Why you need stirrer and why you don't require stirrer in case of tilt tube? Because either way, whatever we are heating it along the V-shaped arm, right? मतलब हम लोग ऐसे घुमा घुमा के उसको हीट करते हैं. तो हीट करंट जनरेट होते हैं जो पहले यहाँ से मतलब ये आर्म में जनरेट होता है, फिर यहाँ से फिर ऊपर के आर्म में जाता है, फिर वो tilt tube के एक्चुअल एरिया में आता है जहाँ पे थर्मोमीटर है. तो ऐसे जो हीट करंट जनरेट होते हैं ना, वो हीट करंट की वजह से देयर इज नो नीड ऑफ अ स्टरर व्हेन वी आर यूजिंग अ tilt tube, but when you are using a beaker you definitely need a stirrer so that you can maintain a constant temperature. Otherwise, wherever the burner is, if it is in the center, then only that much portion will have the higher temperature than the surrounding liquid. Okay. So you are supposed to take care that you are constantly stirring if you are using beaker for the determination of melting point. But the ideal assembly is that you should use a tilt tube for uniform heating. Okay? Yes, ma'am. Yes. Okay. So understood the assembly part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we will see one by one. First order simply. Now this is tilt tube. Okay, so these are the flow directions. See, whatever I told you just now while heating. Okay, ये जो region B है, region B. Wait, let it get projected. Tilt tube. Yes. Now you can see a diagram wherein they have mentioned at the bottom, see the second diagram, the region B, region A and the main center tube of tilt tube. Okay. So this is what region B से current flow हो रहा है. देखो direction arrows का. Then it is reaching to region B. Then it is coming towards the main center area of the tilt tube. So this way the heat currents are generated, because of which the uniform heating is possible. Okay, so this is the glassware which is used for determination of melting point, tilt tube. Now next you can see the thermometer. Now all of you know that there are various type of thermometers, right? अलग अलग थर्मोमीटर्स होते हैं, जैसे कि अभी कोविड में तुम लोगों ने देखा होगा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए एक गन यूज करते थे, है ना? तुम्हारे फोरहेड पे प्रोजेक्ट करते हैं, so okay, so that is also you can say it is recording the temperature. Okay, clinical thermometer is there which you can see here. So out of these different types of thermometer, we are using a glass thermometer which is having a mercury bulb at its end. Okay, then slowly and eventually it is having the graduations also, you can see where the readings are mentioned, 20 degree, 40 degree, 60 degree, 80 degree, like that. Okay, and slowly and eventually as the temperature will rise from the surrounding atmosphere of the thermometer, the level of mercury will rise. Okay, and it will give you stoppage point, मतलब एक constant temperature achieve होगा जहाँ पे आपको अपना melting point मिलेगा. Okay, फिर और क्या यूज करते हैं? Then secondly we use capillary tube. अभी कैपिलरी ट्यूब ने देखा होगा 11th-12th में किया होगा ये एक्सपेरिमेंट, राइट? Yes, ma'am.
So this way the capillary is, which you can see in the picture. Okay, it is open from both the ends. You are supposed to seal one end of the capillary, wherein you can fill the sample from the another end. Okay. Then next we have liquid paraffin, which is a chemical used for determination of melting point, boiling point. So you can see, you can mark 2 to 3 things in this. What is the level of liquid paraffin? कहाँ तक fill किया है liquid paraffin? Above the arm of, above the V-shaped arm Yes. of scales too. Yes, just slightly above the arm of the thin tube. Okay. Then the thermometer level, you can see it is just in the center of the arm, or it can be little bit up also. Okay. But it should not touch to the bottom. It should not touch to the side, because the sides of the thin tube and the bottom is directly in the contact of the heat. So there can be the alterations of the temperature, and you cannot get the exact melting point. And you can you see एक comparatively, मतलब एक ऐसे तुम लोग अपने फिंगर को पकड़ोगे और इतना लेवल देखोगे about 1 सेंटीमीटर, वहां तक आपको व्हाइट कलर का कंपाउंड दिख रहा है टिल ट्यूब में, कैपिलरी में फिल किया हुआ. Yes, ma'am. Yes, you can zoom the screen if it is not properly visible. Okay, so this way the capillary ka level and thermometer ka bulb ka level should be at the same level. Okay, then why we use liquid paraffin? This we have already discussed. It is having high boiling point, emollient properties, so safe to handle, and alternative liquid which is used instead of liquid paraffin is concentrated sulfuric acid. Okay. Then thermometers are, various types of thermometers also have mentioned in the slide, but there is no need to go through this because you already know. See this, forehead thermometer is there, digital thermometer is there, okay, plastic strip thermometer is there, glass and mercury thermometer is there, okay, and this is one of the links wherein you can get the detailed description about the thermometer if you want, okay, for your general knowledge point of view, okay. I'm not going to stress more upon this part because this is not the actual part of our syllabus. But I will make this PPT available to you for your reference so that later on you can go through this and you can, whenever the free time is there, you can utilize that and you can gain some more knowledge. Okay, because this is very general thing, thermometer, which you require in daily routine. Okay? एक अलग थर्मोमीटर होता है, फिर इसका जो गन मैंने अभी एक्सप्लेन किया टेम्परेचर मेजरमेंट का, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर, दे हैव देयर डिफरेंट ओन मैकेनिज्म टू वर्क. ओके, so why for determination of melting point we are using only a glass thermometer? A glass thermometer which is having a bulb at its end, which is filled with the mercury, the suitable liquid called as mercury. When this bulb contacts a hot object, liquid in it will expand. मतलब mercury expand होगा और वो ट्यूब में rise होगा. Okay, and it will help us to give the reading. मतलब जो liquid का level होगा हम लोग easily observe कर सकते हैं glass tube से, and we can note down the melting point of that particular substance which is given to us. Okay. Yes. Yes, ma'am. And there are some reasons why we are using this only. क्यों? क्योंकि ये थर्मामीटर में रीडिंग्स विजिबल होते हैं, इससे ग्रेजुएशंस होते हैं, बहुत सारी बाकी चीज़ें भी है कि ये एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, फास्ट रिस्पॉन्स देता है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को कवर करता है, ये सारे इसके एडवांटेजेस है. एंड द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग अ ग्लास थर्मोमीटर. ओके. Yes. Now, next
Yes. Now next is stepwise procedure. Now when we are going to cover the stepwise procedure, in procedure you can make a schematic. Now what schematic? अभी डेमो में तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा. But when someone asks you the procedure, let's say I will share one incident with you. When I was fresher, okay, when I just completed my graduation B Farm, and I was not having any plans to pursue my higher education at that time. So I tried giving different interviews. So when I went to TCS and Cognizant, okay, at that time it was they were in great demand. मतलब they were recruiting the pharmacists to more extent for the pharmacovigilance and clinical trial के departments के लिए. So that time there was a huge queue. Whole day the interviews were going on. Already we were exhausted. And then when we went, okay, when I faced the interview, that time interviewer asked me that tell me the procedure to prepare this thing, like how you will prepare pav bhaji. Okay. So is this a question? क्या लगा तुमको आपके कि ऐसा कैसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है? लगा होगा बहुत से लोगों को, राइट और नॉट? Yes, miss. Yes, the same way I felt. What I felt like, is this a question? The whole day we waited and the person is asking us that how to prepare pav bhaji. So I answered it the way, मतलब जैसे मुझे आया, the way it was possible for me, I answered. But later on, when we finished the interviews and when we came to know the reason behind that, the same question why they asked to every means whatever the candidates were there, the reason behind that they wanted to see the systematic approach for that question. Okay, so this is just wait, Madhura.
Hello? Yes. Hello? Yes. Yes, Audible ma'am. now? Yes. Yes. Now we will go. Yes. Now we will go through the stepwise procedure. See, already you have seen the demonstration. So we will not take much time for the procedure. Okay. The very first step. Where I was? I was there on the question. Why they asked such question, right? So what do you feel? Why they asked such question? आपको क्या लगता है? आंसर तो वैसे ही मैंने बता दिया है तुम लोगों को कि दे वांटेड टू नो द सिस्टमैटिक अप्रोच, मतलब उनको ऐसे नहीं चाहिए था कि समझो अगर किसी ने बोला, हाँ मैंने पूछा कि अभी जैसे मैंने तुम लोगों को इनिशियली पूछा कि आई वांट टू नो फ्रॉम फ्यू पीपल्स दैट व्हाट यू अंडरस्टूड, so I wanted to see a systematic approach कि first whatever the amount was with us, मतलब जो कैश दिया था, जो हमारा बजट था, उसके accordingly we went to market, we bought vegetables, we washed them, we cutted them into the pieces and we boiled it. After boiling we mashed the vegetables, till that we chopped the onions and other masala content and then we proceeded. So ये जो systematic approach है ना, मतलब मार्केट जाने से, वेजिटेबल्स लाने से, उसको वॉश करने से, उसको बॉईल करने के बाद, वो रेसिपी पूरा तैयार होने के बाद उसको सर्व करने तक का उनको स्टेप वाइज प्रोसीजर चाहिए था. मतलब अगर मैंने प्रोसीजर पूछा और अगर आपने बोला कि कैपिलरी में सैंपल फिल किया, थर्मोमीटर में उसको रखा, will it work? Will it work? Yes? समझो आपने फिफ्थ स्टेप पहले बोला, सेकेंड स्टेप बाद में बोला, so is it going to work? Yes? No, ma'am. No. Do we call it as a procedure? Definitely not. Okay? So, when we are going for the stepwise procedure, the very first step when you are determining the melting point is to take a capillary and seal it at its one end by holding it in flame for a while. मतलब क्या? फ्लेम में उसको पकड़ना है, रेड हॉट होने तक वेट करना है. Once the end gets sealed, you are supposed to put it off the flame. Okay? Then the next step is, after that you are supposed to take small quantity of the powdered organic compound into the sealed capillary tube. मतलब कैपिलरी में powdered substance लेना है. फिर वो कैपिलरी ट्यूब को थर्मोमीटर से टाई करना है. थर्ड स्टेप क्या है? टाई द कैपिलरी. फर्स्ट स्टेप क्या है? सील द कैपिलरी. सेकेंड स्टेप क्या है? फिल द कैपिलरी. देन थर्ड स्टेप क्या है? टाई द कैपिलरी विद द थर्मोमीटर. Okay? Then immerse the thermometer with the capillary tube into the liquid paraffin which is taken in the sealed tube. Okay? And you are supposed to take care that the thermometer or the thread should not come in contact with the liquid paraffin. Okay? मतलब उसको प्रॉपरली टाई करना है और वो सील ट्यूब के कांटेक्ट में भी नहीं आने देना चाहिए. और जो ऊपर का जो कॉर्क है असेंबली का, उसको लिक्विड पैराफिन टच नहीं करना चाहिए. ओके? थ्रेड और रबर रिंग मतलब क्या? ये जो ऊपर लगाया है ना, ये दिख रहा है सबको रबर कॉर्क. फिगर डी में देखो, फिगर डी, रबर कॉर्क, इज इट विजिबल? यस? Yes, ma'am. हाँ, तो ये बहुत ऊपर है वैसे भी, बट यू शुड नो दैट द लेवल ऑफ द लिक्विड पैराफिन शुड बी जस्ट अबव द आर्म ऑफ दैट सील ट्यूब. ओके? तो ये पता होगा तो मतलब पूरा तुम लोग फिल नहीं करोगे और ये लिक्विड पैराफिन के डेफिनेटली कांटेक्ट में नहीं आएगा. राइट? ओके? Shall I proceed now? Yes, ma'am.
हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टील ट्यूब को हीट करना है स्लोली विद द हेल्प ऑफ बर्नर. Then the rate of heating should not be more than 3 degrees Celsius per minute. So this is an identical parameter which is given. 3 degrees Celsius temperature rise should not be more than 3 degrees Celsius. मतलब जब तुम लोग हीट करते हो तो while heating एक स्ट्रोक में 3 डिग्री से ज़्यादा रेज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, इतना स्लो हीटिंग होना चाहिए. ओके. And then how you are going to note the melting point? Note the temperature at which solid compound is converted to liquid and record its melting point. Okay? ठीक है? Yes, ma'am. Okay. And then repeat the procedure twice and take the observation. मतलब टोटल कितने रीडिंग हो गए? 3. पहला वाला जो तुम लोगों ने लिया एंड ट्वाइस रिपीट करना है, मतलब वो 2 रीडिंग. तो टोटल रीडिंग कितने हो गए? 3. Which is there in your manual. See, this is an observation table which is there in your manual, if you can see. Yes? दिख रहा है observation table सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So here it is serial number and temperature in degrees Celsius. First reading, second reading, third reading. And how you are going to take the melting point? The average of all these three. मतलब समझो एक 121 आया, एक 122 आया, एक 125 आया. तो तीनों 121, 122 plus 125 divided by 3, and you are going to take the average, which will give you the melting point of the organic compound. So you will write down the result that melting point of given sample of organic compound is dash. Okay? And the melting point of the given sample of organic compound as per the official book, matlab what is the melting point which is mentioned in the Indian pharmacopoeia is dash. So the melting point of benzoic acid which is mentioned in the official book is 121 degrees Celsius. It is not necessary that your reading will also be the same, because there can be impurities in the substance. Okay, there can be human error. मतलब हर कोई एक उतना स्टेबल नहीं होगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन है. अंकुर ही इज वेरी मच स्टेबल एंड धैर्य ही इज नॉट दैट स्टेबल एज अंकुर इज. यस. तो क्या होता है वो टाइम when they both are taking the readings at that time, Ankur is having a bit stability compared to Dhairya. तो धैर्य का concentration उतना नहीं हो पाएगा जितना अंकुर का हो पाएगा. This is don't take personally, this is just an example, both of you. Okay? So it depends on human errors also. मतलब हम लोग कितना concentration से, हम लोग कितना carefully readings ले रहे हैं, how procedure, what are the steps we are following, how accurately we are up to the mark for the procedure, okay, to how much extent we are up to the mark for the procedure, all that parameter also count. Then external parameters, matlab summer, winter, rainy season, all these external parameters, okay, air pressure, all these things are also getting counted in the determination of or whatever the practicals we are performing. Okay, so ये सारे parameters उसमें होते हैं. Human parameter है, external atmospheric parameters है, okay, then assembly के parameters है, all these things are there. So this can vary as well as खुद substance भी एक parameter हो सकता है कि उसका impurity, उसका purity, all these things will also matter. Okay. और जो रीडिंग है, अगर अंकुर को 123 आया है और अगर धैर्य को
121 आया है तो अपना अपना ही लिखना है, दूसरे का कॉपी करके नहीं लिखना है when you are performing in the lab. Okay, now you are not performing, that is a different part, but the thing is whatever the observations you are getting, you are supposed to note the same observation whatever it may be. I may mix some other compounding benzoic acid and I may give it to Dario and I may give a pure benzoic acid to Ankur. So it depends on that also, the type of sample which you have got. So always remember, not only with melting point, whatever the experiments are there, qualitative, identification, whatever observations you people are getting, the same observations you are supposed to write down in each of the experiments which we are going to perform henceforth also. Got it? Yes? Yes, ma'am. Now, the conclusion. If the melting point is not same as the value stated in the official book, मतलब क्या, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं है जो ऑफिशियल बुक में या फिर लिटरेचर में दिया हुआ है, then it may be due to the presence of impurities in the given organic compound. Okay, hence the given sample is pure or impure. If you are getting the melting point plus or minus 2 range approximately, which is mentioned in the standard official book, then you can say that the given sample is pure. And if it is deviating to much extent, then you can say in conclusion that the given sample is impure. Okay? Yes? Understood till here? Yes. Now we will go to the point number 11. These are the questions. Okay? So questions के answer जो है, now the first question is define melting point. तो melting point क्या है? Melting point जो है, if you will see here, the melting point is wait. It is the temperature at which solid exists in equilibrium with liquid under an external pressure of 1 atmosphere. मतलब 1 atmospheric external pressure में जब solid liquid के equilibrium में exist करता है, then it is called as melting point. Okay. What is the next question? How melting point is useful in identification of organic compound. मतलब हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है मेल्टिंग पॉइंट. ओके, so here we have the answer. Okay, wait. Ma'am, if identical impurity. Sorry. मैम अगर आइडेंटिकल इम्प्योरिटी रहेगा तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट रहेगा ना, और अनआइडेंटिकल इम्प्योरिटी रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट तो और अफेक्ट ज्यादा करेगा कम ना, हो जाएगा. ज्यादा मतलब होगा क्या ना? है आइडेंटिटी, हाँ, और ज्यादा कम हो जाएगा. क्योंकि इसका मतलब क्या है, समझो फॉर एग्जांपल स्पेरिकल मॉलिक्यूल है. ओके, स्पेरिकल शेप है और जो इम्प्योर सब्सटेंस तुम लोग ऐड कर रहे हो वो भी स्पेरिकल शेप का ही है, तो ये आइडेंटिकल इम्प्योरिटी हो गया. या फिर स्ट्रक्चरली रिलेट करता है तो ये आइडेंटिकल इम्प्योरिटी हो गया. तो ऐसे केसेस में मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लोअर हो जाता है. बट अगर अनआइडेंटिकल है, मतलब स्क्वायर शेप है, शेप में चेंज है, स्ट्रक्चर में थोड़ा ज्यादा अल्टरेशन है, फंक्शनल ग्रुप का अल्टरेशन है, देन it might lower the melting point to greater extent. Okay, so it depends on the type of impurity also. Yes. Understood? Yes ma'am. नहीं समझा है तो बताओ, I will tell you again. Understood ma'am. हाँ, मतलब स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी
ओके, क्रिस्टल शेप का सिमिलैरिटी अगर है तो ये आइडेंटिकल इम्प्योरिटी हो गया, और अगर उसमें सिमिलैरिटी नहीं है तो ये अनआइडेंटिकल इम्प्योरिटी हो गया। मतलब क्या, सब्सटेंस एंड इम्प्योरिटी ये दोनों भी रिलेट नहीं करते। ओके, देन हाँ, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ इट इज यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। वी हैव सीन इट इन थियोरेटिकल पार्ट दैट if the substance is pure organic compound, then it will have a definite and sharp melting point. So the parameter is going to help us in identification of organic compound. Okay, the next is whether the or has no effect on the melting point। मतलब impurity melting point को increase करता है, decrease करता है, या फिर कुछ भी इफेक्ट नहीं है। क्या है इसका आंसर? इम्प्योरिटी इंक्रीज करता है जब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। नहीं नहीं, इम्प्योरिटी जब प्रेजेंट होता है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ना। Yes, ma'am. नो मैम, इम्प्योरिटी इंक्रीजेस व्हेन विद डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। No, no dear. What we are determining? We are determining melting point. You are not mixing the substance when you are performing the practical, no? मतलब अगर जो सैंपल तुम लोगों को दिया है उसमें अगर इम्प्योरिटी है तो इट इज गोइंग टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। अभी ये क्यों लोअर करता है? व्हाई इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट? जो मैंने तुम लोगों को बोला, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ओके, मतलब जो सॉलिड होता है, सॉलिड सब्सटेंस जो होता है उसके बीच में बॉन्डिंग होती है ना। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ओके, स्फेरिकल शेप के मॉलिक्यूल्स है एक्चुअल सैंपल के, और कोई अलग शेप का मॉलिक्यूल है इम्प्योरिटी का, तो वो जो प्रॉपर मतलब जैसे एक कॉम्पैक्ट डेंस स्ट्रक्चर होता है, सारे सेम शेप के होंगे तो वो डेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और कुछ अलग शेप आ गया उसमें, स्फेरिकल में स्क्वायर आ गया, ओके, रेक्टेंगल आ गया, तो उसमें वाइड्स रहते हैं ना, खाली स्पेसेस रहते हैं। मतलब क्या होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाने की वजह से, वॉइड इंक्रीज हो जाने की वजह से, जब हम लोग उसको टेम्परेचर देते हैं, जब हीट करते हैं, तो वो ऑलरेडी फोर्सेस वीक है, उनमें वॉइड है, वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। समझा अभी कि क्यों लोअर करता है मेल्टिंग पॉइंट? यस। Yes, ma'am. मतलब क्या होता है, अगर इरेगुलर शेप के क्रिस्टल्स अपने एक्चुअल सब्सटेंस में प्रेजेंट है तो वो ऑलरेडी वॉइड बढ़ाते हैं। मतलब समझो अभी स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल तुम लोगों को एक ग्लास में फिट करना है, तो वो प्रॉपरली फिट होंगे क्या? No, ma'am. नहीं। और उसी के जगह पे तुम लोगों को 3 स्फेरिकल शेप दिए, वो 3 तो वो कंपेयर टू इरेगुलर शेप। Yes, ma'am. ये तो हाँ, तो ऐसा ही होता है सैंपल के केस में। अगर इम्प्योरिटी है और वो अनआइडेंटिकल है तो क्या होता है, उसमें वॉइड ज्यादा रहता है, स्पेस ज्यादा रहता है, और वो जो बॉन्डिंग होता है, ओके, दो एटम के बीच का बॉन्डिंग होता है, वो क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्डिंग होता है, वो ऑलरेडी वीक होता है इम्प्योरिटी की वजह से, और वो वीक होने की वजह से वो जल्दी ब्रेक हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट जल्दी अचीव कर लेता है। तो ये कम कर देता है मेल्टिंग पॉइंट को। मतलब जो टेम्परेचर हम लोगों को लगता है हीट करने के लिए, वो टेम्परेचर कम लगता है। मतलब अगर बेंजीक एसिड में इम्प्योरिटी होगा तो वो 121 पे मेल्ट नहीं करेगा, वो 100 पे ही मेल्ट कर जाएगा। अंडरस्टूड नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? यस मैम। यस।
Hello? Hello? Yes, ma'am. Sorry for the interruption. There was a discussion going on for the practical, afternoon practical. Okay. Now, this one. What is the purpose of using calibrated? Fifth question नहीं हुआ ना हमारा? Fourth question. Fourth. Third का. Impurity का effect you understood the effect of impurity properly? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now, fourth is which alternative liquid you can use if liquid paraffin is not there. So, what is the answer for this? Sulfuric acid. Concentrated extract. Yes, concentrated sulfuric acid. Then, what is the purpose of using calibrated thermometer for determination of melting point? Why we use calibrated thermometer? It gives higher accuracy. It gives higher accuracy, and the readings are as reliable as possible. Okay, yes, correct. Okay. तो ये जो पीपीटी में मैंने रिटर्न है मेरा फैन रिटर्न, ये पीपीटी मैं टीम में शेयर करती हूँ और इस पे भी शेयर कर देती हूँ ग्रुप पे भी. That you will understand and you can write the answer. Okay, 12:25. 12:31 क्वेश्चन है. ये 7 क्वेश्चन हमारे मैनुअल में आंसर लिखना है. मैनुअल में आंसर लिखना है और वो आंसर see manual you are supposed to write down the answers in the manual now in this half an hour. Okay. Yes, Am I ma'am. clear? Yes, So ma'am. this Ma'am, answer. ma'am. Yes, this answer. Yes. Ma'am, we need Yes. we need to write the observations now. Yes. So जो है हम लोग Ma'am, your voice is breaking. See, whatever the reading are there, no? Yes. Now this, 121, 123, 125 कुछ भी तुम लोग ये 120 से 125 के रेंज में लिख सकते हो 3 रीडिंग और उसका एवरेज आंसर में लिखो. ओके. Okay, ma'am. ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट. ठीक है. ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन ये कंप्लीट करना है. ओके. एंड क्वेश्चन का आंसर. ठीक है. और उसको टीम्स में अपलोड करना है. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अपलोड करना है. आर यू गेटिंग? मैम मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन सिर्फ इतना नहीं लिख सकते. मेल्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट व्हिच द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. No, no. Ideal definition, no. It is solid exists in equilibrium with the liquid at external atmospheric pressure. Okay, 1 atmospheric pressure. External pressure which is 1 atmosphere. Okay. और मैम ऑफिशियल बुक में उसका क्या है मतलब मेल्टिंग पॉइंट? 121. It is 121. Okay. Okay. Now you take down the questions for synopsis. In last practical I told you na that we will conduct synopsis also. So synopsis तुम लोगों का 1 बजे तक सबमिट हो जाना चाहिए. Okay? Write down question 1. Write the question 1 and तुम लोगों को इसके आंसर लिख के सबमिट करना है. Write the glassware used in laboratory along with uses. Write the glassware used in laboratory along with uses. Okay? और ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन लिखो any 5
जो ग्लासेस मैंने एक्सप्लेन किए थे तुम लोगों को, वो एनी 5 ग्लास। हाँ, यस। मैम प्रैक्टिकल के लिए अलग से रफ बुक बनाने का है? ये सिनॉप्सिस के लिए बनाना है। और जो इंस्ट्रक्शंस, मतलब अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें अगर कुछ आपको लगता है कि दिस पॉइंट आई शुड नोट डाउन, दैट पॉइंट आई शुड नोट डाउन, so you can note it down into that rough manual, okay? And date, more important, the date. हर एक एक्सपेरिमेंट का डेट डालना चाहिए वहां पे, ओके? तो आज का डेट जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, आज का डेट डालना है वहां पे। क्या है आज का डेट? 21. यस, 21/9/2021, okay? And it is Tuesday. Like kids, आपको बोलना है कि ये सब लिखना है, okay? Just keep a practice of writing all these things. फिर सिनॉप्सिस का दूसरा क्वेश्चन लिख लो। Name the standard reference books which are used for practical along with full form of SOP and MSDS. अभी ये पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, सेकंड क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। MSDS का फुल फॉर्म लिखना है, SOP का फुल फॉर्म लिखना है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के नाम लिखने हैं, ओके? नेक्स्ट इज व्हाट इज SOP, ओके? SOP क्या है? draw one representative format. SOP का, okay? Then next is you are supposed to write down last practical का, हाँ, why fume hood chamber is used, okay? Then fifth question है, मैम फोर्थ क्वेश्चन रिपीट करो ना। fourth question, why fume hood chamber is used, okay? Then fifth question is write down the full spelling of all second year subjects along with the code, okay? क्या है क्वेश्चन? सारे सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, उनका एब्रीविएशन लिखना है, उनका सब्जेक्ट कोड लिखना है, ओके? दिस क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स and one extra question, write few safety rules to be followed while working in lab, okay? Write some safety rules to be followed while working in lab. Now this question you are supposed to attempt any 5. Attempt any 5 out of 6, ठीक है?
समझा क्वेश्चन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So now this complete PPT. This complete PPT, I am sending it to you on Teams. Okay. Okay, ma'am. इसमें से तुम लोग क्वेश्चन देख सकते हो. सिनॉप्सिस पहले कंप्लीट करो. सिनॉप्सिस पहले कंप्लीट करो एंड देन गो फॉर मैनुअल. और जैसे ही मैनुअल कंप्लीट होता है, मैनुअल को लेबल करना है. आपका नाम, आपका रोल नंबर एंड एक्सपेरिमेंट नंबर. क्या चीजें हैं? हॅलो मॅम. हाँ, मॅम हे सिनॉप्सिस प्रत्येक एक्सपेरिमेंटला असणार. yes, and the marks are going to get counted in your day-to-day assessment. तुम्हाला 10 मार्कांचं प्रॅक्टिकल असतं आणि 10 मार्कांची डे टू डे असते ना. येस मॅम. मॅम मग फर्स्ट एक्सपेरिमेंटचं सिनॉप्सिस नाही दिलं, डायरेक्ट सेकंड एक्सपेरिमेंटचं दिलं. फर्स्ट एक्सपेरिमेंटचे सिनॉप्सिस जे आहेत, इंट्रोडक्शन टू लॅब, ते आता घेतलेत आजच्या प्रॅक्टिकलला. ओके. आणि Okay, ma'am. लास्ट प्रॅक्टिकल जे होईल, लास्ट प्रॅक्टिकल, त्या लास्ट प्रॅक्टिकलला ॲडिशनल सिनॉप्सिस तुम्हाला मिळेल. ठीक आहे. म्हणजे हे मेल्टिंग पॉइंटचे जे सिनॉप्सिस तुम्हाला मी आता दिलंय, ते तुमचे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटचे मार्क झाले. कळलं? ओके मॅम. आणि पुढचा जो सिनॉप्सिस राहील ते तुमचे मेल्टिंग पॉइंटचे मार्क्स होतील. ओके. आता मी सेम PPT अश्विनी व्हॉट्सअपला पाठवते आहे. दॅट सेम PPT ऑल्सो यू कॅन फॉरवर्ड and one file also I am sending it to you. That file also you can share it on the group. Okay. ठीक है. येस मॅम. Yes, ma'am. So write down the answers for the synopsis fast and submit it in the team. Okay. Yes, ma'am. Till that I will take the attendance. You can start writing the answers. I will take the attendance. कोमल म्हात्रे. कोमल म्हात्रे. आम्ही फक्त प्रेझेंट लावते आहे. जसे जसे नावं दिसत आहेत तसे तसे यू कैन कंटिन्यू राइटिंग. मतलब आपको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा. ओके.